What are the reflexive pronouns? Let us discover about them. Reflexive pronouns, this is why they are called, because they refer back to a person or thing. They reflect back. Okay? कैसे करते हैं? Let us study the following sentences. जैसे for example, in sentence number first में I cut myself when I was making dinner last night. I hope you enjoy yourself at the party tonight. यहाँ third में my phone is not working properly. It turns itself off for no reason. खुद बखुद बगैर कोई मतलब खराबी के मेरी मोबाइल जो है वो बंद हो जाती है. 4 में we need to believe in ourselves more. हमें अपने आप में ज्यादा बिलीव करना चाहिए कि we can do whatever we want in this world. Nothing is impossible. 5 में he hurt himself. यहाँ ourselves, she hurt herself. तो जो ये सर्कल्ड हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं इसे हम रिफ्लेक्स प्रोनाउंस कहते हैं, बिकॉज दे बाउंस बैक, दे रिफ्लेक्ट देयर मीनिंग. सब्जेक्ट के साथ वर्ब की और ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी मीनिंग्स को, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्स प्रोनाउंस कहते हैं. एंड come to the next point that is very important, that in some cases how we use the same words reflexive pronoun in an emphatic position or in a fashion. Number 1, जैसे he wants to pass his driving test so that he can drive himself. Drive himself. In this sentence, we have emphasized the meaning or the sense of a person we are speaking of, that so that he can drive himself, ताकि वो इसलिए मतलब टेस्ट पास करना चाहता है ड्राइविंग की, ताकि वो खुद उसे चला सके या वो खुद ड्राइव कर सके. And in second sentence, she broke her arm, so she could not wash herself very easily. In second sentence, it shows कि उसने अपनी जो आर्म है वो उसने ब्रेक किए, और इसकी वजह से दिस इज वाई वो अपने जो क्लोजेस है वो वॉश नहीं कर पाती आसानी. And if we speak of the third point, which is undoubtedly crucial to know about, that is by. ये एक स्ट्रक्चर है, by plus reflexive pronoun. In sentence number 1, he usually goes on holiday by himself. अब हम by यूज कर रहे हैं. by का मतलब यहां है alone. by जो मीनिंग दे रहा है alone. ओके, का मतलब है कि he usually goes on holiday. ये उमूमन खुद अकेले जाता है हॉलीडेज पे. And do you enjoy being by yourself? Do you enjoy by being yourself? जैसे हमने ये by अगेन alone की मीनिंग दे रहा है, तो ये एक स्ट्रक्चर है रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. दिस इज व्हाई वी एडेड. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है, डेमोन्स्ट्रेटिव, नाउ व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव?
Demonstrative is a word which is derived from Latin word demonstrate, which means to show clearly. And what is the definition of demonstrative pronouns? Actually, demonstrative pronouns are used to point out the things and persons. Things are objects. Now let us study the following sentences. Jesse, this is an apple. What? This is an apple. That is an apple. This, that. ये जो दोनों वर्ड्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो सिंगुलर वी यूज एज अ सिंगुलर या सिंगुलर की मीनिंग में यूज करते हैं एंड बोथ शो we use both demonstrative pronoun this and that to show far away और distance के लिए हम यूज करते हैं जैसे this is an apple this जो हम यूज करते हैं वो नियर के लिए यूज करते हैं एंड जो that हम यूज करते हैं वो फार के लिए इस्तेमाल करते हैं these are apples and those are apples अब जो ये दोनों ये प्लूरल के तौर पे हम यूज करते हैं और दीज जो है वो नियर के लिए हम यूज करते हैं और दोज जो है वो फार के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये चार जो दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं और ये इसी तरीके से हम यूज करते हैं एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं सेम वर्ड्स कैन बी यूज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्ट के तौर पर भी हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को एडजेक्ट के तौर पर कैसे बिकॉज एज वी नो दैट एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन्स तो हमें जब ये पता है कि एडजेक्टिव हम नाउन के साथ यूज करते हैं तो सिमिलरली इन दीज सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड नाउन्स विद एडजेक्टिव्स हाउ लेट अस स्टडी दिस हाउस अब जो दिस है और ये हाउस जो है वो नाउन है ओके एंड दैट कार अगेन कार नाउन है दीज फ्लावर्स नाउन मैंगोज ये नाउन ओके तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हम नाउन के साथ यूज करते हैं जैसे दिस हाउस इज अ बिग वन that car is so fancy these flowers smell sweetly those mangoes are so tasty or those mangoes seem so tasty लग रहे हैं हम point out कर रहे हैं those mangoes because we are not near to mangoes we are far away from mangoes this is why we are saying look at those mangoes seem so tasty and these flowers because they are near to us this is why we can smell we can touch it this is why we are saying these flowers smell sweetly or very fragrantly and that car is so fancy that we because the car is away from us this is why we are pointing out the car that car is so fancy and again this for near